you remember I shared this with you, right? कि जब वो कैसे, I think it is this part where he talks about censorship and what else was it? It was like leadership Yeah, or formation of yeah. जो एक myth of metal अभी एक्चुअली pianist. हमारी हमारी जो डिस्कशन है वो इंशाल्लाह अभी इसी से शुरू होगी, राइट? सो अब हमारे पास जो रियासत थी वो बन गई. द सिटी स्टेट इज बिल्ट. ओके, वी हैव सोल्जर्स, वी हैव फार्मर्स, वी हैव कारपेंटर्स, वी हैव एवरीथिंग. ओके, नाउ वी नीड टू ट्रेन द सोल्जर्स. हमें गार्डियंस को ट्रेन करना है, ठीक है, क्योंकि हमने उनमें ये क्वालिटीज डाली है, हमने उनको एक खास तरह से बनाना है, ठीक है. पहली चीज हम क्या करेंगे? रूल नंबर वन, हम उनको खुदाओं के बारे में कोई भी झूठे किस्से नहीं सुनाएंगे. ओके, तो झूठे किस्से क्या है? तो पहले झूठा किस्सा हम उनके बारे No, में क्या नहीं सुनाएंगे खुदाओं by के the बारे way, में. if it's not, it is, and surely we must value truthfulness highly. For if it were that falsehood is of no use to gods and only useful to men. तो उसमें basically it's not just कि कैसे था झूठे किस्से, it's just कि anything that portrays God Them in in a bad negative, light. Okay, in a bad and this light. is the first rule of censorship. So you guys keep up. Okay, वो censorship के हमें मुख्तलिफ चीजें देगा कि हम बिल्कुल ये सेंसर करेंगे. And when he says censor, he means it. Like हम आगे जाके बताएंगे. Okay, तो इसमें he says इसमें the only just person who has the ability to lie is the ruler. रूलर कोई भी झूठ बोल सकता है. इन सोक्रात के सिटी में the ruler has a full license to make up stories, make up myths, make up lies to keep people in this their positions. You were saying? I was saying, and the reason you need to understand why he says that we cannot portray God in a negative light is to understand Greek जो mythology है. Because उसमें, for example, the character of Zeus, who is जो Mount Olympus पे, he उसके character is very, how should I say, dubious in a sense. कभी वो कैसे कहते हैं, वो हीरा के साथ cheat भी कर रहा है. I So mean, obviously, like, these are like pagan gods, right? So हाँ, कुछ भी कर रहे हैं. Like, I mean, they're killing each other, they're fighting. There's like it's literally like everything is happening. By the way, अगर तुम लोगों ने मतलब Avengers देखी है, so those are actual pagan gods like Thor, Loki. These people are actually like ये खुदा है और उनके. हाँ, by the way, it's not, Odin. नहीं, those are like जो ये वाले है ना, Oh, Thor, sorry, sorry, Odin. sorry. Yeah, 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 That's yeah. I'm thinking about क्या है? Norse mythology. North. Yeah, yeah, yeah. Sorry, yeah. गलती से. But it's the same kind of. It's not that different. It's not हाँ that हाँ different. Okay. आइडिया सेम ही है. मतलब there's a family, Zeus है, उसके बच्चे भी होते हैं, Prometheus, ये सब लोग होते हैं, right? So you have all these people, and it's a whole like mythology, full stories. अगर मतलब कुछ पढ़ना है तो Hesiod पढ़ो. Hesiod is like one of the oldest text about this. It's like a poem. Theogony. Theogony is a poem. Hesiod is the writer of the poem. But पहला उसूल क्या है? तो मतलब व्हाट डज इट मीन जब हम कहते हैं कि तुम खुदा के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते? तो पहली एग्जांपल वो देता है. हम होमर इज द बिगेस्ट ग्रीक पोइट बेसिकली, ठीक है. हम होमर को ये कहने नहीं देंगे कि जूस के पास दो ग्लासें पड़ी हुई है, एक अच्छे किस्मत की और एक बुरे किस्मत की, जिसको चाहे अच्छा देता है, जिसको चाहे बुरा देता है, ठीक है. और जिसको अच्छा देता है उसको बुरा नहीं कर सकता, जो बुरा देता है. I had actually a lot of like a big problem with this because we had this thing, and then I asked my teacher, and my teacher is a Christian. So I said, in Islamic understanding, right, we would actually, we are more close to Homer than we are to Socrates. क्यों? क्योंकि अमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही वल खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला. So good luck and bad luck are both from God, God. which is kind of similar. There is a tawil that you can do of Socrates, because what he says, whatever is either हम या ये कहेंगे कि मतलब ये खुदा से नहीं है, या हम री इंटरप्रेट करेंगे कि भाई ये चीज़ जाहिर में तो बुरी लग रही है लेकिन बातिन में ये अच्छी है, which is kind of the interpretation that generally theologians will also do, right? They will say this thing looks bad, but it's actually not bad because God doesn't do anything bad. ठीक है. बट सेंसरशिप बेसिक लॉ यही है कि कोई भी चीज़ बुरी हम खुदा के बारे में या खुदाओं के बारे में नहीं कह सकते. ओके, देन यू हैव पॉइंट्स पे दूसरी जो प्रोहिबिशन होती है, जो दूसरी सेंसरशिप है, ठीक है. हम आखिरत को डरावना नहीं बता सकते, ठीक है. हम आखिरत को अच्छा बताएंगे, डरावना कभी नहीं बता सकते. दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? बिकॉज ही डजंट टॉक अबाउट हेल. he only talks about, he said, the whole point he's saying is that हम आखिरत की जब भी बात करेंगे, we are only talking about heaven,
राइट? and there is a very interesting bit in the book. I can't find the exact part जिसमें वो कहता है कि we This cannot is have book our three beginning, so you can look हाँ for हाँ that. Yeah. उसमें वो बेसिकली ये बात करता है कि we cannot have our heroes because आपने बेसिकली ये किताबें पढ़ानी है अपने गार्डियंस को, Yeah. so you cannot have your heroes जो कैसे कहते हैं मौत से डरते हो, Yeah, ठीक है। yeah. और उसके These are this second and third censorship का मकसद ही यही है। थर्ड में है कि वो हमारे पास लेमेंटेशन पोइट्री नहीं होगी। सो एक तुम्हारे पास वो पोइट्री नहीं हो सकती। पोइट्री बाय पोइट्री ही मीन्स लाइक एनी, बिकॉज पोइट्री वाज द वे ऑफ लाइक टीचिंग पीपल, राइट? सो फर्स्ट यू हैड खुदा के बारे में कोई बुरी बात नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ क्या है कि तुम्हारे पास वो नहीं हो सकती आफ्टर लाइफ को, मतलब क्या दूसरी दुनिया को, मौत के बाद तुम डरावना नहीं बता सकते। तीसरी चीज कौन सी चीज है कि तुम वो नहीं कर सकते, तुम लेमेंटेशन पोएट्री नहीं कर सकते तुम, मतलब रोने धोने वाली पोएट्री। क्यों? क्योंकि इससे लोगों को मतलब कमजोर बनते हैं। ठीक है, अब तुम क्या कहते हैं? also in this it also talks about कि कैसे जो lamentation पे ही continuation है कि if for example अगर एक अच्छा इंसान है आइडियोलॉजिकली, अगर एक अच्छा इंसान है तो इफ ही लूजेस लाइक हिज ब्रदर और सिस्टर विल नॉट शो हिम क्राइंग। और उसका बेसिक ये है कि एंड पोएट्री में यही है ना कि इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट। या तो अगर आप ये दिखाओगे लोगों को तो इट गिव्स देम एन आइडिया कि दिस इज समथिंग एक्सेप्टेबल। या so this is interesting, right? One is this is what I really found interesting about it, right? So what he's saying is that the influencer in the society, right, the people who influence minds, ठीक है, उसके वक्त में वो शायर थे, हमारे वक्त में कोई भी हो सकता है, यूट्यूबर कह लो, स्कॉलर्स, थिंकर्स, उलमा, कोई भी, राइट? वो लोगों को, खासकर सोल्जर्स को, मौत से नहीं डरा सकते। मकसद तो यही है ना कि उनको मौत से नहीं डरा सकते, ठीक है। और दूसरी उनको, और ये जो दो तरीके वो बताता है, दीज आर बेसिकली मेथड्स, बट मकसद ये है कि उनको तुम मौत से नहीं डरा सकते। और लिमिटेशन पोएट्री के बारे में व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज, अहले सुन्नत वल जमाआ में limitation poetry is limitation is basic, not poetry, but limitation is not like appreciate, it's not jazz actually, right? For according to most scholars, like for example, रोना धोना, पीटना, सीना मारना, ये सब अहले तशय्युई उसको इबादत समझते हैं, right? And then you have the opposite side of the coin where so first, what do you think about that? इन विच बिट? So you see, right? So you, जब तुम देखते हो कि अहले तशय्युई वो रोना धोना वगैरह को, मतलब इन मौत को याद रखने को, इन सब चीज़ों को याद रखने को वो इबादत समझते हैं। लेकिन जब तुम हमें देखते अहले सुन्नत वल जमाआ को, हम उसको मतलब अच्छा ही नहीं समझते। I don't think it is as much as कि किस कहते हैं forgetting of the death. It is more about how you perceive death in a certain way, right? हम्म। And the willingness to accept। एक तो वो जी अगेन वी गो बैक टू किस कहते हैं प्लेटो इन दिस के अगर आपने एक अच्छी रूलिंग क्लास बनानी है, ठीक है, हम्म। you cannot encourage these ideas of किस कहते हैं how do you say what would be the correct terminology over here of your soldiers। And I don't think when Ahletishi they put it they portray their how do you say heroes as Interesting thing, right? Up until up until the 20th century, hmm, that was the purpose behind no and stuff. hmm, ओके, सो ये तुम्हें तब पता चलेगा जब इंशाल्लाह हम आएंगे अली शरियाती पे। ओके, hmm. अल्लाह उसके बुद को रोशन करे। अली शरियाती पे जब हम आएंगे ना, तो फिर तुम लोगों को अंदाजा होगा कि इट टुक अ ग्रेट फिलोसोफर एंड अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीटली शिफ्ट द वे दिस होल थिंग इज व्यूड। 20th सेंचुरी से पहले मोस्ट लाइक स्पेशली इन द सफवीद एरा, जो लेमेंटेशन और ये चीजें थी ना, उसका मकसद ही उदासी था। उसका मकसद ही यही था कि हम उनके लिए रोए। उसका मकसद ही यही था कि हम अपने लिए गिल्टी फील करें कि भाई व्हाई डिड वी डू समथिंग बैड। इट इज हिज वर्क स्पेशली, but also there's like preceding scholars in the you're, you're, Shia talk, Mazhab, you're talking right? about it from the Islamic revolution वाला point of किस कहते हैं Kind point of, of view। kind of, yeah. But so you have to, when Ali Shariati does, his black Shiaism or red Shiaism, वो उसको इस तरह करता है। He says there's black Shiaism and there's red Shiaism, ठीक है? And फिर वो define करता है। And his whole point is कि black Shiaism is this methodology जहाँ पे जो नोहा है, जो lamentation poetry है, जहाँ पे ये करबला, ये सब चीजें किस लिए? These are like pacifying things। मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज कहता हूँ। हमारे एक उस्ताद ने, यहाँ पे हमारा एक उस्ताद है, ठीक है, वो भी इसी काइंड ऑफ पैसिफिस्ट माइंडसेट से है, जिस पे हमने इतनी वीडियोस बनाई, राइट?
वो यही तो उसने कहा कि मैं लोगों को सुनता हूँ कि जो हुसैन की बात करते हैं, ठीक है। एंड तुम लोग, आई मीन, साहिल अदीम साहब को भी अगर तुम लोग देखोगे तो वो यही बात कर रहे हैं, हुसैनियत, लाइक हुसैनियत को इस्तेमाल किया जाता है टू राइल पीपल अप, राइट, टू गिव देम लाइक दैट आइडिया कि यू शुड सैक्रिफाइस एवरीथिंग, एंड इट शुडंट रियली बी द बिगेस्ट थिंग इन आवर And लाइफ। by the way, just on that, that is what Plato talks about. या When he says that you should not portray your heroes in a light कि जहाँ they're scared to lose anything, right? या या And वो कहते हैं कि अगर somebody loses their father or their sister or their daughter, it shouldn't have, क्योंकि एक just man के लिए, ठीक है, it should not be a problem because उसकी जो thought process है वो थोड़ा एक higher कैसे कहते हैं स्पेक्ट्रम पे है। यही बात है, मतलब हमने अपने सोल्जर से जो मौत का डर है वो बिल्कुल 0% फैलाना है, ठीक है। लाइक वी वांट देम पीपल हु, जिनको लाइक इट्स लाइक खालिद इब्न वलीद रदियल्लाहु अन्हु, जब उसने वो खत लिखा कि मेरे पास वो लोग हैं जिनको मौत ज्यादा पसंद है जितना तुम्हें शराब पसंद है, राइट। तो दैट्स द ट्रेनिंग दे प्लेटो इज वांट्स टू गिव हिज सोल्जर्स, हिज रूलिंग क्लास, हिज गार्डियंस, ठीक है। But if you come to the, so this is what kind of Ali Shariati twisted. हमारे जो उस्ताद थे तो उसने ट्वीट किया and he said, I hear all these people talking about like Hussein, but they forget that Hussein lost, right? And I remember, so I have like, I don't know which book it was, and हाँ, but continue, sorry. yeah. तो मेरे दोस्त ने मुझे उसका वो ट्वीट दिखाया, right? And man, I was kind of pissed. I was like, just the fact that he wrote that line, like, Hussein last. I'm like, Wait, wait. did he really Uh, lose? He said Shabab al Jannah. So like, did he really lose? Like, what but do you mean by that but last? that also what you call is also what Plato talks about when he says that we need to exemplify heaven and the idea of Yeah, heaven so that these people and which is what like majority of किसे कहते हैं Muslims have done in that sense, right? जो हम बात कर रहे थे कि Muslims what you call do not yeah. accept I क्या mean कहते जब जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है जो लाइक शहीद है उनको मुर्दाना कहो, मुर्दा नहीं है, वो अल्लाह के पास है, उनको पास रिज़्क है। मिल रहा है। तो उसका मकसद यही है कि तुम्हें एक ट्रेनिंग मिल रही है, राइट। So, which is we are trying to show the parallels in like these thoughts process कि भाई तुम लोग मतलब इन सब चीजों को जब तुम देखते हो, and this is I think what we really need to, this is what I want people to, I don't want people to just look at things and say oh X Y, like get out of this first layer of life, like जहाँ हम जब Surface आएंगे ना level layers of life पे, I think Pakistani they're probably like the lowest level of life, right? So हम इस पे आते हैं inshallah, but this was kind of like an interesting, I just wanted to kind of reflect on this, but let's move on, okay? And again, the principle, right? सिर्फ रूलर्स को ये इजाजत होगी, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, किसी को झूठ सिखाया भी नहीं जाएगा। द आइडिया ऑफ लाइक कि तुम झूठ बोल सकते हो, हम इतना मतलब लोगों पर सच इतना गालिब होगा, लाइक इतने लोग सच बोलेंगे, द आइडिया ऑफ कि तुम झूठ बोल सकते हो ये लोगों को पता ही नहीं होगा। लाइक यू वांट टू एक्चुअली रिमूव द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक झूठ फ्रॉम सोसाइटी, right? also yes. Yeah, but there's only one person who is exempt from this rule, and that is the philosopher, the king. जो रूलर है, जो बादशाह है, he can make up anything to keep people in the correct position. हम आते हैं कि वो कौन कौन सी झूठ वो लाजमी बोलना बोलेगा वो, ठीक है।